कह दे वो ले आएंगे. We are live now, I guess. So we are live now. Okay, can you start? जी, बिस्मिल्लाह. Bismillahirrahmanirrahim. So I thank you for joining the Khuli Kachehri. I am Dr. Arshad Taqi, President of Pakistan Medical Commission, and this Kachehri is being held on the directives of the Honorable Prime Minister of Pakistan. I welcome all the students, graduates, local as well as foreign graduates, doctors from within the country and abroad, house officers, general public for joining this Khuli Kachehri, this e-Kachehri. This is actually specially organized to directly address all the grievances and concerns of the students. मकसद इसका ये है कि आपके जितने भी सवालात हैं, आपके जितने भी मामलात में कुछ में आपको कोई परेशानी है, हम उसको एड्रेस करें. आप उस पर यहाँ डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ सवाल लिखकर, और जो सवालात आपके ऑलरेडी आ चुके हैं और हमारे पास आपने पहले भेजे थे, हम उनके जवाब देंगे, और उसके साथ साथ जो आप सवाल इस वक्त पोस्ट करेंगे, अगर वो उन सवालात से मुख्तलिफ हुए तो उनके भी जवाब देंगे. तो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू सर. Thank you so much, sir. I'd like to first thank our panelists. हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं. हम शुरुआत करते हैं सर. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है वो सना गुल साहिबा की तरफ से है. वो कह रही हैं कि I'm optimistic to get admission in public medical college. My complaint is about KMU admission policy, as according to PMC notification dated 13th November 2021, that only those students with late result are eligible for admissions in 21-22 that appear for the first time in special exam, and improvers are not allowed. But now KMU is going against PMC notification and they are going to consider all students, either improvers or those which first time in special exam as an annual exam. She's saying that this decision is completely injustice with fresh students, because to the improvers in the same calendar year, 2 opportunities provided to improve. Thank you very much. Thank you very much for raising this question, which has been raised time and again. So let me clarify something. Pakistan Medical Commission is the regulator of admissions, in which ways they give broad outlines of who merits to be admitted in a medical college. But actually it is the discretion of the admitting institution, whether they be public or private, to declare their own policies within the framework of Pakistan Medical Commission. Public sector medical college universities, जो admitting universities हैं हर province की, ये उनकी discretion है कि वो उसको आगे rules को apply करते हुए क्या criteria बनाएं. ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उनके इस मामलात में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते. सो ये पॉलिसी में अगर कोई आपको महसूस होता है तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से आप इसके सिलसिले में रब्ता करें. थैंक यू सर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमें बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे डिफरेंट पोस्ट के नीचे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, और जब हमने कचहरी अनाउंस की तो उसके नीचे भी रिपीटेड तौर पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हेन विल वी अनाउंस द सिलेबस फॉर एमडी कैट 2022. जी, 2022 एमडी कैट सिलेबस इंशाल्लाह जनवरी के महीने में, होपफुली वेल बिफोर द एंड ऑफ जनवरी हम इंशाल्लाह इसको अनाउंस कर देंगे. आपने इसके साथ साथ ये पूछा पैटर्न. जनरली पैटर्न में कोई ऐसी बड़ी चेंज नहीं होगी. ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द syllabus over this year is completely aligned with what our expectations are at the point of entry of medical college. उस हिसाब से कुछ probably subjects में से कुछ realignment की जाएगी और कुछ
ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक अब आगे ह्यूमन साइंसेस से नहीं है उनको बीच में से निकाला जाएगा, लेकिन इसके बारे में एकेडमिक बोर्ड जो हमें गाइडलाइन देगा और जो एक्सपर्ट्स की तरफ से आएगी उसकी रोशनी में ये सिलेबस इंशाल्लाह जनवरी के महीने में ही ये अनाउंस कर दिया जाएगा। वो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन सर हम अलॉन्ग द वे लेंगे क्योंकि वो क्लब हुए हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, निसार मियाँ जो है वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि वी द स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ अफगानिस्तान have cleared NEB, National Equivalence Board Examination, and still we are facing many problems. Afghan universities are closed till unknown period, and they have already cancelled our adaptions there. In Pakistan, we have the following issues. We are not eligible to seek adaptions in public sector's medical colleges, although there are many vacant seats available in public sector medical colleges across the country. If PMC is not allowing our adaptions in public sector, then help us to find the vacant seats in private medical colleges on low fee. जी हम already we are aware of the fact and we are constantly in deliberations on this issue. Inshallah, we gave this opportunity for these students to appear for NEB exams and a significant number of them has actually passed, and inshallah we are working on accommodating all of them within the framework of our regulations. तो रेस्ट अश्योर कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अन करीब हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। Alright. अब्बास अमीन के क्वेश्चन है कि Sir, I belong to KPK. I have 179 marks in MDCAT, but in elective subjects I have 526 out of 600, which are not good marks. I decided to apply for special exam, but after PMC notification, I decided not to apply. I have now 687 rank according to the first KMU merit list, but if KMU MBBS seat. First question unse ye hai कि if KMU had to include special exam marks, then why did it not issue notifications earlier like UHS? Second is, if PMC is not stopping them from this inclusion, then why had they issued notification in which they made it clear that these special exam marks are not for this year, but next year, right in the middle of registration for special exams? जी, the spirit of that notification was very clear, और वो यही था कि हम उन बच्चों को जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्पेशल कोविड सिचुएशन को सामने रखते हुए जो एक अनाउंसमेंट थी कि एक स्पेशल एग्जाम के मार्क्स को कंसिडर किया जाए, हमने इन व्यू ऑफ दैट हमने ये कंसेशन दी थी इस दफ़ा के लिए वन टाइम कि इस एग्ज़ाम को आप कंसिडर कर लें। हाउएवर जैसे मैं पहले क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि ये डिटेल में इसकी पॉलिसी कि इनमें इनको किस तरह से रखना है, क्या वेटेज देनी है, ये सब कुछ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है और हम इसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो उन्होंने क्लियरली अगर ये डिसाइड किया है कि जो दोबारा स्पेशल एग्ज़ाम देगा जो पहले दे चुका है उसको भी कंसिडर करना है, तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आपकी अपनी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, आप उनसे रब्ता करें। थैंक यू। मोहम्मद सलमान अजहर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, I have passed all mandatory stations in NLE 2 and secured 68% marks, so I feel a need to review and apply for rechecking of my result. On calling PMC helpline, I was told they have not addressed with any policy regarding result review. Please shed light on this. Thanks. Okay, thank you. Thank you for your question. The exam result that has been is already reviewed by the team of the experts, and there are no chance of ambiguity in it. And the second thing, according to PMC exams regulation, section 18, subsection 2, the result of the NLE is communicated and issued shall be final and shall be neither available for rechecking or any other objection from the person having taken the exam. आप ये regulations खुद भी review कर सकते हैं. These all are available on our website. Sir, आपको चाहिए? इस पे थोड़ा मैं आप सब लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि एग्जाम में आपके एग्जामिनर्स आपको देखते हैं, आपके एग्जामिनर्स अगर क्या जो स्कोर होता है वो उसमें हमेशा फाइन समझा जाता है। इसके अलावा अगर रिव्यू होता है और वो यहाँ हर केस में होता है कि जब ये रिजल्ट हमारे पास आता है तो वो रिव्यू किया जाता है कि टेबुलेशन में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। So all this process has been carefully selected. Now, if by review you mean
that you will come and review your own scores. I'm sorry, but your examiners are supposed to be the one who's scoring. You can request and people have actually come and requested, and the examination department has been very clear that they went on and retabulated wherever there was any ambiguity on part of the student. So at some point you need to close this, and now it has been closed and the result is final. I feel that you having scored 68% marks may be feeling a little disappointed, but then it is all about trying for the next time and making sure that next time you score well beyond 70%. You are going to become a licensed practitioner, and each one of these stations in this actually identifies an area of patient care which is important to patients' lives. So if you fail a station or get low marks on a station, that means your skill in that area is slightly wanting and you need to prepare harder. So please understand, this is a licensing exam. At the end of this licensing exam, all of you are going to go and be certified to take care of the patients. So let's keep that in mind. Thank you. Thank you, sir. Acha, Noman Tahir saab ka question hai, I want to tell you that in KPK public sector medical colleges, there are 140 seats for general self-finance for those students who have aggregate lesser in points than those on open merit. In previous years, I believe. In previous years, the fee was only 4 lakh, and this year they have increased it by 100% up to 8 lakhs. How would a poor student be able to afford that? Please, sir, take some action against this policy. I shall be very thankful to you. थैंक यू मैडम. बेसिकली ये देखें, ओपन मेरिट से हट के सीटें हैं, वैसे प्रोविंशियल है हमारा, तो सीट अलोकेशन के साथ होता है और मेरिट के साथ अलग होता है. तो ये फीस बेसिकली सूबाई गवर्नमेंट का डोमेन है, पब्लिक कॉलेजेस में एडमिशन्स हैं, तो इस पे हम तो कोई डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते. तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रिक्वेस्ट करें और इनको रिव्यू करें और इनको रिलीफ दें जो पुअर बच्चे हैं आगे आ जाएं. अदरवाइज ये हमारे डोमेन में बाय एंड लार्ज हमारे पास आता नहीं है. 4 से 8 लाख रुपए फीस करना पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के, ये पब्लिक सेक्टर की एंटिटी है. जी Okay. Raja Kambar Ali Saab कह रहे हैं कि those local graduates who have passed final year exam before October 2021, but their house job will finish in April 2022, will they have to appear in NLE? इस पे भी हमारा बड़ा क्लियर पॉलिसी है कि सितंबर 2020 के बाद जो भी ग्रेजुएट होगा तो उनको जो है कि एनएलई से गो थ्रू होना पड़ेगा, और इसी तरह इन्हीं बच्चों को भी जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं इस पीरियड में उनको ज़रूर देना पड़ेगा फॉर द फुल लाइसेंस. हाउएवर, जैसे ये देखें कानून बहुत क्लियर है, जो सितंबर 2020 से पहले का ग्रेजुएट है उसको ये एग्जाम देना पड़ेगा. अगर कोई सितंबर 2020 से बाद का ग्रेजुएट है तो उसको ये एग्जाम, उसके लिए एग्जाम होगा, जो उससे पहले का है उसके लिए एग्जाम होगा. तो इस पे तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है. अगर आप इससे पहले एग्जाम पास कर चुके हैं तो फिर आपको एग्जाम्पशन है. Thank you. Noman Khan Baloch question कर रहे हैं कि what are the pathways for students of Chinese institutions? Please have a look on Nepali Medical Commission. They are charging half fee of students from their respective university and offering them clinicals in local teaching hospitals of Nepal. Kindly consider this too and make some pathways for us, please. जी देखें, हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन ग्रेजुएट्स के लिए जो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर से गुजर के गए हैं. लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग फर्स्ट. 2 लाख के करीब बच्चों ने अप्लाई किया, उनमें से 20,000 के करीब बच्चों को एडमिशन मिलेगा. They are going through an extremely difficult, extremely vigorous process with very clear criteria कि उनके FSC में कितने मार्क्स होने चाहिए, MD CAT में कितने मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद भी एक competitive process से गुजर के गए हैं. The number of training institutions for undergraduate training for house jobs and all the trainings are designed according to the needs
and the capacity of the system. अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन मुल्क से बाहर का ये अंडरटेकिंग लेता है एक स्टूडेंट के साथ कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको ग्रेजुएट करा के हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, तो उस इंस्टीट्यूशन के पास ये पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको डॉक्टर बना के भेजे उन तमाम शराइत के साथ जो कि एक डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी हैं, एंड दैट इंक्लूड्स क्लिनिकल ट्रेनिंग। अगर वो इदारे आपके या वो यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको ये नहीं दे रही तो ये उनका और आपके दरमियान का मुआहदा है। आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपने हमसे मुआहदा किया, हमसे फीस ली, आप हमें प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर क्यों भेज रहे हैं, या आप हमें प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर सर्टिफाई क्यों कर रहे हैं, या हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्यों दे रहे हैं। सो ये एक पाकिस्तान वापस, अब हमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको उसके लिए बाकायदा एक सीट्स एलोकेट करनी पड़ेंगी, हॉस्पिटल्स के अंदर कैपेसिटी बनाना पड़ेगी, और वो फिर कौन करेगा उसके लिए, उसकी फाइनेंसिंग कौन करेगा, उसकी फंडिंग कौन करेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पॉलिसी के तहत होती हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ है और पेशेंट केयर की ट्रेनिंग के साथ है। सो ये इतने सिंपल हल नहीं है कि हम कह दें कि जी आप वहाँ से पढ़ के आएँ और यहाँ आके ट्रेनिंग कर लें। जिस इदारे ने आपको साथ ये वादा किया है कि वो आपको डॉक्टर बना के भेजेगा और उसकी वो फ़ी भी हैवी चार्ज कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बना के भेजे। थैंक यू। सनाउल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सर, माय क्वेश्चन इज व्हाई पीएमसी इज नॉट अपडेटिंग द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन किर्गिस्तान। Why PMC is not updating the list of universities in Kyrgyzstan? There are few bad universities in Kyrgyzstan which are being rejected by IAAR, and few good universities, and they got IAAR accreditation, which was the criteria given by PMC. So I request you to do something. It's been a year and we are fed up of black-green universities. Kindly do something. Give us a final or clear-cut list. हमें कुछ कंसर्न्स थे और उन कंसर्न्स को एक्चुअली हमारे पिछले हफ्ते भी किर्गिस्तान एम्बेसी से उनके एम्बेसडर साहब तशरीफ़ ले आए। हमारी अपनी एम्बेसी की तरफ से कम्युनिकेट हुआ और उनकी गवर्नमेंट ने हमसे कम्युनिकेट किया कि हमारे जो कंसर्न्स थे वो अनफाउंडेड नहीं थे, दे वर वेल फाउंडेड। वो उनमें वैलिड था। उनकी अपनी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया और अभी ये फैसला किया कि ए, वहाँ कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाएगी, बी, कि वो पिछली तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान उनको रिव्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कंसर्न शो किया किर्गिज़ गवर्नमेंट ने कि वहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे चल रहे हैं जिनके पास के वो सहूलियात नहीं है कि वो टीच कर सके, ट्रेन कर सके, ना उनके पास कैपेसिटी है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास फैकल्टी है। और ये उनके लेटर में बड़ा क्लियरली और डिसीजन में, कैबिनेट के डिसीजन में किया गया। सो हमारे ये कंसर्न्स अनफाउंडेड नहीं थे। नेक्स्ट चीज़ कि ये एक सिर्फ IAAR एक्रेडिटेशन जो कि हमारे नज़दीक एक क्राइटेरिया था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेशन थी, अब हमें ये महसूस हो रहा है कि वो फ़कत वो नहीं, हमें वहाँ की गवर्नमेंट ने खुद प्रॉमिस किया है कि जो डाटा हम मांग रहे थे वो कंपाइल कर रहे हैं वो और हमें देंगे। उस डाटा की रोशनी में हम अपने इन डिसीजंस को रिव्यू भी करेंगे। इस वक्त तक हमने ये तमाम डिसीजन हमने होल्ड पे रखी हुई हैं, क्योंकि हम बगैर कंप्लीट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के फैसले नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सर। आसिम साहब पूछ रहे हैं, सर, आई हैव मेड अ मिस्टेक इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर NLE एंड आई एम अनेबल टू एडिट द पर्टिकुलर्स। आई हैव नॉट पेड द फी येट, व्हाट शुड आई डू? तो इसमें मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि फ़ी पे करने से पहले इनके डैशबोर्ड के राइट साइड पे एक एडिट एप्लीकेशन का बटन है, ये वहाँ जाके अपनी सारी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एक बार जब आप फ़ी पे कर दें फिर आपका सारा प्रोफाइल डाटा लॉक हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर फिर आगे स्केजुलिंग और सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। फ़ी पे करने से पहले ये जितनी बार चाहें अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जो लैंडिंग पेज है लॉगिन करने के बाद उसकी राइट साइड पे एक एडिट प्रोफाइल का बटन है, ये उस पर क्लिक करें और अपनी सारी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर और स्टूडेंट्स की क्लैरिटी के लिए, ये सिर्फ NLE के लिए अवेलेबल है? स्टेप 1 नहीं, ये NLE स्टेप 2 की इस टाइम ओपन है रजिस्ट्रेशंस, मेडिकल की और NLE डेंटल की इस टाइम ओपन है। इन दोनों में ही ऑप्शन अवेलेबल, दोनों में ही ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, आप काइंडली उससे चेक कीजिए और उससे आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए।
Thank you. Heather Abbas question kar rahe hain ki I had applied for PMC scholarship. I am selected in CMH Bahawalpur Medical College. They have given 3 days to pay fee till 29 December. Today I visited CMH Bahawalpur. They said they have nothing to do with scholarship. Just pay fee in 3 days. Otherwise admission will be cancelled. जी हमारी बात हुई है नाम से जो कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है CMHS की और उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कॉलेजेस को हम ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं कि 31 तक आप इनको नहीं कर सकते उन्होंने हमें कहा है कि जिन स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और वो मेरिट पे आते हैं तो उनको एकोमोडेट कर लेंगे So please don't panic and you don't need to go to the individual colleges. We have talked to their admitting universities. वो इंशाल्लाह हम तावन करेंगे. थोड़ा सा मैं ये clarify कर दूं कि for the scholarships we have more than 10,000 applications. Going through those applications, we do not have 10,000 scholarships. So the funds are limited. They have to go to the most deserving, and we also have to need to look at not just the merit of the person who is seeking scholarship, but also their needs. And this requires a little bit of looking at all their data and getting all that information together. इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है. Please bear with us, be patient. हम इसी पे काम कर रहे हैं. लेकिन रेस्ट एश्योर कि अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है और आपका मेरिट पे वहाँ फर्स्ट मेरिट में या मेरिट पे वहाँ नाम आ जाता है तो फिर इस वजह से आपसे ही वो सीट इंशाल्लाह डिप्राइव नहीं की जाएगी. हम बात कर रहे हैं और हम कॉलेजेस के साथ भी राब्ते पर. सर इसी पे हम वही क्वेश्चन आ जाता है कि when are you going to announce the selected candidates for scholarship fund which is 31st December तक? जी नहीं, it's as I said, it's a complicated process. We are looking at the data, but we will do that as soon as possible. We aim to do it, of course, we aim to do it by 31st, but that does not mean because there's a lot of checking and cross-checking to do before we finally announce those. You will be informed before the admission processes are complete, and you will be securing your seats, inshallah, if you earn your scholarship. Thank you, sir. Javeria Javed question कर रही हैं कि Dow University of Health Sciences is currently paying stipend of 20K per month to its dental HOs, while our rightful pay is 45K set by PMC. DUHS, MBBS, HOs are getting 45K. We rejected this discrimination against BDS house officers. Kindly take action on this. इसमें मैं जवेरिया साहबा को क्लियर कर दूं कि हमारी पॉलिसी तो यूनिफॉर्म है सब हाउस ऑफिसर्स के लिए कि उनको बराबर मिलनी चाहिए. इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो डेंटल हाउस ऑफिसर्स हैं उनको कम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल. हमने डाउ यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कम्युनिकेट किया है ये कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए. और हम जवेरिया साहबा को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो अपनी पे स्लिप वगैरह हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमें भेज दें तो हम इसको फर्दर एक्टिवली परसू भी करें. सर कोई ईमेल एड्रेस है जहां भेज सकते हैं या फिर बाय पोस्ट member.education पे member.education@pmc.gov.pk पे हमें ईमेल कर दें along with the pay slip के प्रॉपर एविडेंस के साथ वो आपको परसू करें. अदरवाइज हमने ये कन्वे कर दिया है और डाओ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जो है कि हमने उनको कहा भी है और हम उनको फर्दर परसू करेंगे ताकि इनके साथ कोई इस तरह की चीज़ ना हो. जी थैंक यू. अब्दुल्ला आबिद का क्वेश्चन है कि इज NLE स्टेप 2 मैंडेटरी फॉर लोकल ग्रेजुएट्स पासिंग इन 2022? प्लीज क्लियर योर पॉलिसी इन दिस रिगार्ड. We will be announcing our policy that includes the syllabus and all the other components of NLE 2 probably in the next few months. But at this point in time, NLE 2 is only mandatory for foreign graduates. Whenever NLE 2 is implemented, you will be informed well in advance. At this point, it is only mandatory for foreign graduates. So I repeat that whenever this is made mandatory for local graduates, it will be announced well in advance. Thank you, sir. अच्छा, अब्दुल्ला आबिद का क्वेश्चन है कि is NLE mandatory to apply for good performance certificate applying for GMC registration?
NLE is not really mandatory because a lot of people get their good standing certificate while doing their house job when they are holding a provisional license. So in order to get a good standing certificate, you may be only holding a provisional license, in which case you have not passed your NLE. However, if you have completed your house job and then are seeking a good standing certificate, then you will have to pass your NLE and get a full registration before you get a good standing certificate. Thank you, sir. Talha Uzair question कर रहे हैं कि what is the last date to apply for NLE step 1 as there is no last date given on PMC website? तलहा, आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करते हैं वेबसाइट, तो वहाँ पे आपके जहाँ पे लिंक है, वहाँ पे बोल्ड में 1 जनवरी मेंशन्ड है, तो 1 जनवरी 2022 इज द लास्ट डेट. वो भी रात 12 बजे तक का ऑप्शन है, they can apply online. ठीक है. So 1st January till midnight is the last date for registration. NLE step 1. जनवरी का जो हमारा है. जी, 29 डेंटल का भी और मेडिकल भी. स्टेप 2 मेडिकल की भी 1 जनवरी है और स्टेप 1 डेंटल की भी 1 जनवरी है, मिडनाइट 1. ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे for clarity? NLE स्टेप 1 डेंटल जो है उसकी भी लास्ट डेट 1 जनवरी और जो NLE स्टेप 2 मेडिकल है उसकी भी लास्ट डेट 1 जनवरी. ठीक है. अच्छा, इसमें शायद क्वेश्चन ये करें कि मे भी वो फर्दर NLE स्टेप 1 की पूछें जो मार्च का सेशन उनकी है. रजिस्ट्रेशंस ओपन है, उनकी registrations open है, मार्च की भी will ओपन है, you जून की भी ओपन है. वो पहले specifically प्री रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं, लोग हाँ, कर भी रहे हैं. Haven't on anything. Exactly. This is step 1 लिखा हुआ है, NLE step Yes, 1. So I yes. guess he's asking about the dental one. Any step. Any step 1. डेंटल की जो अभी जनवरी वाला सेशन है जनवरी सिर्फ वाला। फर्स्ट को क्लोज हो रही है, उसके close हो बाद रही है। बाकी मार्च और जून की ओपन है. मेडिकल वाली तो मार्च और Open जून है, तक वो ओपन open है, वो है. कर जी जी, थैंक यू. अच्छा, अली हसाम जाम क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैन यू प्लीज गाइड वेदर PMDC बैचेस आर exempted from NLE step 2 or not? It has been rumored that all PMDC batches are exempted from NLE step 2 as was the current batch who graduated in March 2021. This is related to अभी जो नहीं, थोड़ा सा जी मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं. There are no PMDC batches or PMC batches. You are registered as a student with Pakistan Medical Commission. Whether at the time of your registration it was PMDC or PMC, that is of no consequence. This is a change in the law. PMDC, what was PMDC as a regulator is now Pakistan Medical Commission. The fact that you were registered then does not give you any sort of a different kind of an entitlement. So please keep that in mind. The law says that you are required to appear for Pakistan National Licensing Exam, the details of which have to be then worked out. National Licensing Exam step 2 is a question of logistics, a question of finding the right way and everything. There's a lot. So whenever it is implemented, as I announced earlier, you will be informed well in advance. Step 2, which is of course clinical skill examination, is an important component and is at this point in time being applied for foreign graduates only. Thank you, sir. Mohammed question कर रहे हैं कि my marks in FSC were less than 60% and he's currently studying in A-list Medical University of China. So is he eligible for NLE? Well, when you are a foreign graduate, you may be coming from United States of America or from Sweden or from France or from UK or from anywhere in the world, and you may or may not have appeared for your FSC, which is what is FSC in Pakistan. So we cannot put a condition of a certain minimum marks on FSC or of FSC for a foreign graduate appearing for a national licensing exam. So please don't declare your marks, FSC marks. We are not asking for it. Thank you, sir. Qiyam Zeib question कर रहे हैं कि what is your policy about NEB test qualifiers? मैं सर मैं कमेंट कर. थैंक यू वेरी मच सर. जी क्याम ज़ेब साहब, ये मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लूँ कि पहले तो ये NEB फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया है इस साल से ना, जो हमारे जो फॉरेन मुल्कों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, ताकि अगर वो पाकिस्तान में आना चाहें, हमारा पर्पज़ ये था कि बाहर बच्चे बैठे हैं वो भी फैसिलिटेट हो जाएं, और जो पाकिस्तान में जो वैकेंट सीट्स हैं जो है कि
ان کو جو ہے کہ اکوموڈیٹ کیا جائے, کوئی سیٹ فل نہ ہو جائے, تاکہ ہمارا جو فیوچر کا ہیومن ریسورس ہے وہ ہمیں ملے. اس کے حوالے سے ہم نے تمام تر پالیسی, اس کا اسٹرکچر, اس کا جو پیٹرن ہے, اس کا فارمیٹ ہے, ویب سائٹ رکھ دیا ہے. اور جس طرح آنریبل پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ایڈمیشن چل رہے ہیں ود ان دا کنٹری مختلف کیٹیگریز پہ, تو ہوپ فلی جو ہے اور اتھارٹی بھی ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے کہ کون سے کالجز میں, کون سے یونیورسٹیز میں سیٹس ویکنٹ ہیں, تاکہ جو آپ جیسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کوالیفائی کریں گے وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں. آئی ہوپ کہ ود ان فیو ویکس چیزیں فردر کلیئر ہو جائیں گی. اور اینڈ وی ہوپ کہ جو تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پاس کیا ہے NAB وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تھینک یو. کچھ کوشچنز ان کو بریفلی ہم لوگ اگر ایڈریس کر لیں کہ نیکسٹ ایئر MD-CAT از گوئنگ ٹو بی آن لائن اور آن پیپر. It will be online. ٹھیک ہے. کوشچن ہمیشہ ہمارے جو MD-CAT ایگزامینیشنز ہے دیٹ ول ریمین آن لائن. Already in all regulations as well. ہاں مینشن آن mentioned in section 6 subsection 2 تو یہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. کمپیوٹر بیسڈ. ہاں کمپیوٹر بیسڈ ہی ہوگا. اور پریزیڈنٹ صاحب نے کلیریفائی کر دیا کہ جنوری میں ہم اس کا پیٹرن, اسٹرکچر اینڈ سلیبس آ فارمیٹ جائے گا. سلیبس بھی آپ کا اکیڈمک بورڈ ول اناؤنس, اور اس کو ہم پبلکلی اینڈ ہمارے ویب سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ ایوری ون از ویری ویل انفارمڈ ہے نا ان ایڈوانس. اچھا وہ پوچھ رہے ہیں سنگل ٹیسٹ ہوں گے یا ملٹیپل ٹیسٹ ہوں گے؟ The decision will be made after the registrations کہ کتنی ہمارے پاس registrations آئی ہیں. According to that it will be designed accordingly. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن حذیفہ صفدر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مائی کوشچن از اباؤٹ دی اپگریڈیشن آف ٹریگس یونیورسٹیز, جو کہ ہم ابھی بھی We have already answered that question. بالکل. نیکسٹ کوشچن بھی ریلیٹڈ ٹو اچھا نہیں سر, PMC said the colleges will reserve seat until PMC announce scholarship. ہاں یہ وہی اسکالرشپ ہے جس میں وہ CMH I have already clarified that. آپ لائیو سیشن میں تھوڑا پیچھے جا کے چیک کر سکتے ہیں. CMH بہاولپور اینڈ اسکالرشپ سے ریلیٹڈ پریزیڈنٹ صاحب نے کافی ڈیٹیل میں پرووائڈ کیا ہے آنسر, تو آپ کائنڈلی اسے ریویو کر لیجیے پیچھے جا کر. ڈاکٹر عبداللہ مینشن کر رہے ہیں کہ آئی ایم ڈاکٹر عبداللہ, آئی ہیو شیئرڈ ہز ڈیٹیل CNIC اور یہ ساری چیزوں کی. ان کا کنسرن یہ ہے کہ when he refreshes his status for NLE Step 2, the application history showing his new roll number and asking to pay again. میں ان کی ڈیٹیلز ہم نے ساری چیک کروائی ہیں. ڈاکٹر عبداللہ پہلے اپیئر ہوئے تھے اگست میں, جو انہوں نے رول نمبر دیا ہوا ہے 1000630 سے, لیکن یہ پاس نہیں کر سکے تھے. ٹھیک ہے. یہ دسمبر میں دوبارہ اپیئر ہوئے فار NLE Step 1, اس کو انہوں نے کلیئر کیا. NLE Step 2 کے لیے انہوں نے رجسٹریشن کی 19 دسمبر کو انہوں نے چلان ڈاؤن لوڈ کیا, اور 27 کو کل 11:26 دن میں 11:26 پہ انہوں نے پے کیا. تو ان کے اکاؤنٹ پہ کوئی بھی فی پینڈنگ نہیں آ رہی. ان کا جو NLE Step 2 کا اسٹیٹس ہے فار اس ٹیسٹ کا جو انہوں نے دسمبر سیشن میں دیا, وہ Step 1 اور Step 2 دونوں پیڈ. تو انہیں جو پینڈنگ شو ہو رہا ہے وہ ان کے اگست والے کو آ رہا ہے, کیونکہ وہ اس کو آلریڈی فیل کر چکے تھے, تو وہ اس میں ایلیجیبل نہیں ہے Step 2 کے رجسٹریشن کے. ٹھیک ہے. تو اپنی اپلیکیشن ہسٹری میں جو سیکنڈ ٹیسٹ میں شو ہو رہا ہے اس میں وہ ایلیجیبل, وہ اپنی پے کر چکے ہیں دونوں اسٹیپس کی. تو وہ ویٹ کریں, انشاءاللہ ان کو اسکیجول جو ہے ان کا انشاءاللہ 1-2 ویکس میں آ جائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبداللہ آپ کا جو سیکنڈ اٹیمپٹ کا اسٹیٹس ہے, آپ کائنڈلی اس کو ریویو کیجیے, کیونکہ آپ کی پیمنٹ ابھی کلیئر ہوئی ہے اور آپ کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ اس سیکنڈ اس میں آ رہی ہے اٹیمپٹ میں. اچھا وردہ قمر پوچھ رہی ہیں کہ اچھا یہ وہی اسکالرشپ سے ریلیٹڈ ہے کہ کب تک آپ اناؤنس کریں گے. یہ بھی وردہ ہم شروع میں ہی ابھی تھوڑا اگر آپ پلے بیک کریں گے ہمارے لائیو سیشن کو تو آپ دیکھ سکیں گے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اسکالرشپ سے ریلیٹڈ کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے. اس سے جو بھی آپ کی اسکالرشپ کے کنسرنز ہیں وہ سارے ایڈریس ہو جائیں گے ان میں. لیکن ایک کوشچن مجھے لگ رہا ہے کہ تھرڈ کوشچن کہ if a candidate receives scholarship for first year, will he or she receive scholarship for the next 4 years as well or not? Because if a student cannot afford fee in first year, how will he afford in the next years? Scholarship, when a student is entitled to a scholarship or a loan, partial or complete, that is for the duration of their graduate program. So یہ نہیں ہے کہ آپ 1 سال کے لیے ان کو اسکالرشپ یا لون یا جو بھی ہے فائنینشیل اسسٹنس دیں گے اور اگلے سال withdraw کر دیں گے. That is for the duration of their graduate program. Of course, it is going to be expected that they will complete the program within the duration that is prescribed duration. سر کافی ڈیٹیلز بھی اس پہ ہمیں کہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس اور یہ ساری چیزیں بھی نیشنل اسکالرشپ جو ہمارا ریگولیشنز ہے وہ مشروط ہیں ہر چیز کے ساتھ کہ آپ اپنے جو پروگرام ہے اس کے اندر آپ کی پروگرس اپنے اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے جو کہ فائنینشیل اسسٹنس لے رہے ہیں یا جو میڈیکل کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں.
اچھا کوشچن ہے ہمارا کہ نگار احمد ہیں, وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ آئی ہیو lodged a complaint against Muhammad College of Medicine Peshawar that college is demanding illegal fees. I have been appeared twice before PMC along with 9 other students, but after lapse of more than 45 days PMC neither took any action nor they decided my case. آپ اس پہ آپ کیس پہ فردر اپڈیٹ. جی نگار احمد صاحب نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے. نگار صاحب بھی ہمارے پاس آئے ہیں اور ان کے جو دوسرے کولیگ ہیں وہ بھی آئے ہیں. ہم نے ان سے کچھ ایویڈنسز مانگے تھے, کچھ ڈاکومنٹس مانگے تھے, دے ہیو پرووائڈیڈ. لیکن اس طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں ون سائڈڈ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. تو ہم جو دوسری سائڈ جو کالج ہے ہم ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے ان کا بھی موقف جان رہے ہیں اور ہم اس پہ جو ہے کہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور نگار صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ود ان کپل آف ویکس this issue for him and his other colleagues will be resolved inshallah ta'ala as per law. Thank you. سید بابر اسلام نے اگین وہی اسکالرشپ سے ریلیٹڈ کوشچن کیا ہے اینڈ آئی بلیو اگر آپ ریورس مطلب آپ اس کو پلے بیک کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے ڈیٹیلز آف اسکالرشپ جو ہے وہ آلریڈی پرووائڈیڈ ہیں. اس میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں, آپ نے پوچھا از دا پی ایم سی اسکالرشپ اپلیکیبل فار اسٹوڈنٹس آلریڈی انرولڈ ان میڈیکل کالجز. ابھی جو اس بار کا فنڈ تھا وہ تو اناؤنس کیا گیا تھا فار اسٹوڈنٹس ہو آر سیکنگ ایڈمیشن ان میڈیکل کالجز دس ایئر. However, we have realized that there are students who are already studying. They have somehow managed to pass through to survive those first year or two or whatever, and now find that it is becoming impossible for them to carry on, or their circumstances may have changed. That would be considered, but for that, of course, that would be a decision that needs to be taken, and the right kind of financial resources also need to be created for this. So at this point, unfortunately, we are only accommodating students who are seeking admission in this session. Thank you, sir. Zahoor Ahmed question kar rahe hain ki dear sir, with great respect, it is stated that we appeared in NAB exam for transfer into second year MBBS Pakistan, but as per our performance, PMC allowed us to get admitted in first year in Pakistan. We accepted the offer and went to some colleges to consider us for admission based on NAB test, but the college demanded a notification from PMC so that they accept us in current enrollment to first MBBS. یہ تھوڑا وہی جو after March والا جو یہ والا جو پروویژن ہے یہ ہمارے ایڈمیشن ریگولیشنس ہیں اس میں بھی ہے پڑھا ہوا ان کے انفارمیشن کے لیے ظہور صاحب کے لیے. اور دوسرا ہم نے این ای بی کا جو اسٹرکچر اینڈ فارمیٹ ویب سائٹ پہ رکھا ہے جو نوٹیفائڈ ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی دونوں ڈاکومنٹس میں پروویژن ہے. تو ہی اور شی کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس کو ایز اے ریفرنس لے کے کسی بھی کالج یا یونیورسٹیز کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے ایڈمیشن کے. سر ون تھنگ کلیئرٹی فرام دا اسٹوڈنٹس پوائنٹ آف ویو, جو ابھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں کرنٹلی جو کہ ختم آپ کمپلیٹلی ہوں گے فیب میں, جو لیٹ کے ساتھ آپ لگا کے کریں گے, یہ ان میں تو ابھی اپلائی نہیں کر سکتے نا. جو ویکنٹ سیٹس اس ایڈمیشن کے بعد ہوں گی یہ ان ویکنٹ سیٹس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا میں کلیریفائی کرتا ہوں کہ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کہ فرسٹ ایئر میں ٹرانسفر کے لیے ایک اسپیشل پرمیشن دی گئی ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے ایز وی سیڈ ارلی we are looking at it and we are trying to solve that problem, because these included those children who have been given that this year exemption for admission in first year only. ٹھیک ہے, فرسٹ ایئر یہ فرسٹ ایئر والا صرف اس سال کے لیے, آگے کے لیے سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر والا آئندہ کے لیے صرف آپ سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کرنے کے بعد تھرڈ ایئر میں ٹرانسفر ہو سکیں گے. تھینک یو. شہاب جو ہیں وہ کوشچن کریں کہ the fee structure proposed by PMC for B and C grade private medical colleges is not obeyed by them and what steps are being taken. This is very touchy and important issue. اس پہ میں شہاب صاحب اور جو بھی سن رہے ہیں ان کو ہم بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ یہ جو ہماری پالیسی ہے اس میں ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لیٹر اینڈ ڈسپلٹ کے ساتھ جو ہے کہ اس پہ کمپلائنس ہو. کچھ ہمیں شکایت ملی ہے کچھ کالجز کے حوالے سے کہ وہ شاید ہماری پالیسی کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تو ہم نے ان کو وارننگ لیٹرس ایشو کیے ہیں اکراس دا کنٹری جہاں جہاں سے ہمیں کوئی کمپلائنس آئی ہے, اور ہم ان سے ان کا موقع بھی جان رہے ہیں. اور ہم اس پہ جو ہے کہ
हम इस पर ला जितना भी हो सकता है एक्शन हो सकता है ज़रूर उठाएंगे जी। ठीक। सुहेल खान क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैन फॉरेन स्टूडेंट्स गिव NLE स्टेप 1 ड्यूरिंग देयर फाइनल ईयर स्टडी व्हिच इज द 5th ईयर? नो, आपको जो है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होगी, उसके बाद आप अपेयर हो सकते हैं NLE एग्जाम में। इसकी फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए आप हमारे एग्जाम रेगुलेशन में सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 to 3 को डिटेल में पढ़ भी सकते हैं एक दफ़ा। हाँ, ये चीज़ें वेबसाइट पे भी पढ़ी हैं, मौजूद है, सब फाइनल ईयर पास करना ज़रूरी है। Either this is MBBS or BDS, दोनों केसेस। ठीक है। एजुकेशन, अच्छा, फी से रिलेटेड एक बात यह है कि जो बच्चों को फी में कंप्लेन है या कोई भी इश्यूज हैं, PMC हैज क्रिएटेड स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस। आप ईमेल एड्रेस की ये डिटेल्स दे दें। fee@pmc.gov.pk, ये कुछ देर में हमारी वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह की फ़ी की कंप्लेंट्स हैं या जो रेलिवेंट डिस्काउंट्स हैं एज पर लॉ, जो कहते हैं कॉलेज में जो एनुअल फ़ी पे कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं या 6 मंथ बेसिस पे कर रहे हैं, उनको वो डिस्काउंट्स ऑफर नहीं हो रहे जो लॉ कहता है, तो उसके लिए भी कंप्लेंट्स इस ईमेल पे कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लेंट्स के साथ आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास वैलिड एविडेंसेस हो, फी स्लिप्स हो या कोई नोटिफिकेशन हो जिसके बेसिस पर उस केस को आगे परसू किया जाए। विदाउट एविडेंस फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ बात करना, तो हमें एज पर लॉ रहते हुए विद एविडेंसेस एंड केस परसू करना पड़ता है। अच्छा, सैफुल्लाह सुमरो क्वेश्चन कर रहे हैं कि एडमिशन इन MBBS एंड BDS इन एवरी प्रोविंस अकर्स एज पर कैंडिडेट्स डोमिसाइल. The merit in Punjab is high as compared to Sindh students in Sindh having comparatively low percentage than Punjab students getting admitted in public medical universities. Therefore, a student from Punjab who couldn't get admission in his provincial public college gets bogus domicile of Sindh made by giving bribe to concerned authorities and gets admission in public colleges, stealing seats from Sindh students. Last year, many students with bogus domicile, mostly from Punjab, got admitted in Sindh's public college on merit, depriving Sindh's own student of medical seats. This year, same practice is being carried out by students of Punjab who have low merit to get admission in Punjab colleges. मैं थोड़ा इसी को I think I'll answer that question. कि of course ये जो issue है, if what you saying is factually correct, then this is unfortunate. But this once again is outside the domain of Pakistan Medical Commission. हम जो एडमिशन का प्रोसेस है और इससे रिलेटेड जो बातें आप डोमिसाइल और वो जो तमाम इश्यूज हैं, उनका PM पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम श्योर कि अगर आप वो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं और गवर्नमेंट्स हैं उनसे अगर आप उनको इन्फॉर्म करेंगे तो वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो इसका नोटिस लेंगे एंड दे विल टेक appropriate action. Thank you, sir. Sadat Khan पूछ रहे हैं कि my brother qualified NEB exam for transferring to second year, but you have been writing in their eligibility certificate that you are eligible for transfer to first year. You have been leaving email address to PMC, but the responses are not declared as per the certificate. जी आप सादात, आपका जो क्वेरी है इसका आंसर सिंपल ये है कि आपके ब्रदर को जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो इनकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस की बेस पर है। अगर वो अपने एलिजिबिलिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो ट्वाइस ईयरली NEB एग्ज़ाम हो रहा है, वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट करके जिस क्लास की उनके पास डिग्री मौजूद है उससे नेक्स्ट में वो मूव होना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अपना स्कोर इंक्रीज करके वो उसमें हो सकते हैं। करंटली जो उनको एलिजिबिलिटी दी गई है दैट इज एज पर देयर परफॉर्मेंस, तो वो इसी साल में एडमिशन ले सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी में सीट वेकेंट हो। थैंक यू। नहीं, डिटेल सर इन्होंने नहीं शेयर की, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। फिर भी सादात खान, आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपना कोई ईमेल एड्रेस बता दें जिनके सादात खान आप अपनी तमाम डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस और ये सर्टिफिकेट और जो भी आपकी डिटेल्स हैं CNIC और ये रोल नंबर एक्सेट्रा आप examination@pmc.gov.pk पर भेज दीजिए। प्रेजेंट साहब ने भी मेंशन किया कि वो खुद भी इस केस को कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज द इशू एंड द बैकग्राउंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी, चोंगशा, चाइना. In recent online Q&A, you have stated about online medical classes and that the degree is not valid unless the student takes relevant clinical practice in a hospital. Sir, दोबारा से हम पिछली कचहरी
से रिलेटेड इसको और क्लैरिटी दे देते हैं बेस्ड ऑन ऑनलाइन I think classes. इसमें you have asked a valid question, and it says that if a university has students, subset of students who were there in China and went through all those practicals and patient bedside teaching, and some of them stayed back and were managing online classes, how are we going to differentiate between the two? We would be actually contacting the universities and asking them that specific question to actually ensure that the students who are granted that graduate degree is granted after all the due instructional requirements have been fulfilled. And only the degrees which are granted after all the due process will be then accepted for national licensing, for the purpose of appearing in national licensing exam. So of course the universities will have to certify that this degree was not awarded online. थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो पीएमसी की स्कॉलरशिप एंड लोन है, आर दे आल्सो एप्लीकेबल ऑन नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस? Yes, they are. They are. It is irrespective of what college you get admitted in. The important thing is, as I said, the important criteria would be, one, your academic performance, which would be measured through your MDCAT results, and your needs, financial needs, as you have stated them and as you have provided proof of that. So the difference between your incomes and your expenses and your needs is being taken into consideration. But once you are selected for scholarship, then that is your admission. It is subject to your getting admission in a medical college on merit, whether it be a private sector medical colleges from NUMS or any other university. That's of secondary concern to us. Yes, NUMS is included. सर पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि 7 years MD डिग्री जो है वो फ्रॉम ईरान, इज इट एक्सेप्टेड और नॉट? ये सर लास्ट टाइम बट इसके ऊपर मैं आपके अगले तीसरे सवाल जो नेक्स्ट आपने कहा है व्हाट इज अ फॉरेन लाइसेंस, इसके साथ मिला के मैं जवाब दूंगा। यस, 7-year MD program for Iran is accepted, and the second important thing is that it is accepted. Why is it accepted, and why the MBBS program for Iran we say we do not accept it, is because a person who goes through a 7-year MD program actually qualifies to get a practice license in Iran, which means that the universities that granted him that qualification, the ministry and the concerned regulatory authorities feels that this person now has the capacity to work as a doctor in Iran and treat patients. So that's what we mean by a foreign license, which means to get a practice license in the country from where you got a degree, as you get a practice license to when you graduate from a degree in Pakistan. थैंक यू सर। क्वेश्चन है, अली क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर दो स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएट फ्रॉम अफगानिस्तान, दे कांट कंटिन्यू देयर हाउस जॉब इन अफगानिस्तान एंड आल्सो कांट डू हियर इन पाकिस्तान बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पीआरएमपी। सो व्हाट इज द पॉलिसी? हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि ऐसे ग्रेजुएट्स को पहले एनएलई पास करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा एज ऑफ टुडे। सो आपके पास रास्ता आसान है, आप नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम दें। आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपके उसके अंदर है मौजूद, लिस्ट में एनलिस्टेड है पीएमसी के पास, आप आएँ, आप नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम दें। एग्जाम पास करने के लिए यहाँ आपको प्रोविजनल लाइसेंस भी मिल जाएगा हाउस जॉब करने के लिए, और इंशाल्लाह कोई ना कोई हाउस जॉब भी मिल जाएगा। अच्छा सर, बिफोर वी एंड एक दो क्वेश्चंस जो हम अभी यहाँ से लेना चाह रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी यही कमेंट्स कर रहे हैं और उनकी कमेंट्स की वर्डिंग कुछ इस तरीके से है कि व्हाई इज पीएमसी कंडक्टिंग स्पेशल एग्जाम। उनको आप थोड़ा क्लैरिटी दें उनको। कौन सा स्पेशल एग्जाम? मतलब वो कमेंट्स में सिर्फ यही कह रहे हैं कि शायद कोई ऐसा कोई स्पेशल एग्जाम हो रहा है, प्रोबेबली इन बलोचिस्तान और केपी के भी उनके ये कमेंट्स आ रहे हैं कि व्हाई पीएमसी इज कंडक्टिंग स्पेशल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कोई भी स्पेशल एग्जाम नहीं दे रहा।
میں کلیئرٹی کے لیے بتا دوں پاکستان میڈیکل کمیشن صرف 3 ایگزام لیتا ہے جو قانون کے تحت اس کو لینے کی اجازت ہے. ایک میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے MD-CAT. دوسرا NEB ہے نیشنل ایکویلنس بورڈ ایگزام which means exam for a student who is studying in an overseas college, foreign college and is seeking transfer to Pakistan has to appear for a national NEB exam. And the third is the national licensing exam which has got 1 step for local graduates and is 2 step at this moment for foreign graduates. ان ایگزام کے علاوہ کوئی اور ایگزام جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن نہ لیتا ہے نہ اس کا اس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے. ہمارا واحد جو اس کے ساتھ ہے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ HSSC which means FSC or A levels or any equivalent exam from where it has been taken. That exam has to be passed and have equivalence of what we have of how many percent in FSC? 65% in FSC. So ہم یہ اور اس اسپیشل ایگزام کے بارے میں آپ تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں کہ منسٹری آف ایجوکیشن نے فیڈرل منسٹری نے کووڈ کی اسپیشل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کہ بہت سارے بچے کووڈ کی وجہ سے ایگزام نہیں دے سکتے, انہوں نے اجازت دی کہ وہ بچے اور جو نہیں دے پائے ایگزام یا نہیں دے سکتے کووڈ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے, وہ اکتوبر میں بھی ایگزام ان کے لیے ایک اور ایگزام دیا جائے گا. انہوں نے پاکستان میڈیکل کمیشن کو منسٹری نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس ایگزام کے ریزلٹ کو بھی کنسیڈر کر لیں نیکسٹ ایڈمیشن کے لیے, جس کے لیے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے ان ریسپیکٹ آف دیئر ریکویسٹ ہم نے اجازت دے دی کہ ان کے مارکس کو بھی ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز کنسیڈر کر سکتی ہیں. اس سے آگے کہ اس کا کیا میکنزم ہے, اس کی کیا ویٹیج ہے, یہ سب چیزیں یہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی. پاکستان میڈیکل کمیشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے 50% ویٹیج MD-CAT کی ہونی ہے. اس کے علاوہ باقی 50% کے اوپر ویٹیج کس طرح کیلکولیٹ کرنی ہے یہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز فیصلہ کرتی ہیں. So I hope this clarifies our position and our legal responsibilities. سر کچھ کوشچنز بیچ میں یہ آ رہے تھے کہ جس طریقے سے آپ نے ڈیٹیل دی تھی کہ NLE میڈیکل کا اسٹیپ 1 فار لوکل گریجویٹس ہے, اسی طرح از ڈینٹل گریجویٹس آف 2021 اسٹیپ 1 ان کے لیے اسٹیپ 1 ہوگا یا اسٹیپ 2 بھی ہوگا فار دیم؟ currently local کے لیے graduates ان کا step 1 ہے. ڈینٹل میں بھی the law the rule applies to both medical and dental. Same rule. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ون کوشچن سر, کلندر بخش لشاری پوچھ رہے تھے کہ پلیز کلیریفائی دا پالیسی آف گیٹنگ ایڈمیشن فار NEB کوالیفائرز. تو ایڈمیشن پروسیس تھوڑا سا بتا دیں کہ جنہوں نے NEB کلیئر کر دیا ہے, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ فار دیم, کیونکہ شروع میں بہت ساری کالز جو تھی وہ PMC آنا شروع ہو گئی تھی کہ آپ لوگ ایڈمیشنز کب اوپن کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے, اس وجہ سے تھوڑا انفارمیشن کا گیپ لگ رہا ہے. ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے کہ جو بچے مائگریشن مطلب باہر کے ملکوں سے پاکستان میں پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں, جس طرح فرسٹ ایئر کے لیے ہم نے اسپیشل ایک ریگولیشن دی ہے, اینڈ فیوچر میں سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر اینڈ فائنل ایئر بوتھ NEB میڈیکل اینڈ ڈینٹل کا ہوگا. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو کینڈیڈیٹ پاس کر رہا ہے NEB اس کو ایڈمیشن ملے گی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ایڈمیشن کی سیٹ کے لیے ویکنٹ ہے ادھر رابطہ کریں. جو بھی جن کو PMC نے ایلیجبلٹی سرٹیفکیٹ دیا ہے یا جنہوں نے پاس کیا ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی سیٹس خالی ہوں گی فرسٹ ایئر میں یا آگے, وہی ہو کہ وہ سب ایڈجسٹ ہوں گے. ہمارا کام اس حد تک تھا کہ ہم ان کو ایگزام لیں گے اور مائگریشن یا ایڈمیشن کے لیے ایلیجبل قرار دیں گے. ایلیجبلٹی ہم نے دے دی ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سیٹس ملک میں جو ہے کہ خالی ہیں, اور جس نے پاس کیا ہے وہ سندھ میں جانا چاہ رہا ہے, پنجاب میں جانا چاہ رہا ہے, AJK میں جانا چاہ رہا ہے, کہاں جانا چاہ رہا ہے, دوسرا کہاں پہ سیٹ خالی ہے, تو وہ جو PMC کے لا ہے اس کے تحت رابطہ کرے. اینڈ وی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹ, یہ ہمارا سالوں سے ہمارے جو باہر بچے پڑھتے تھے ان کے پیرنٹس کا مطالبہ تھا کہ کوئی مائگریشن کا میکینزم ہونا چاہیے.
وہ ہم نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا ہے. ہوپفلی بائی ٹائم یہ بھی فردر اسٹریم لائن ہو جائے گا اور وی ایکسپیکٹ کہ سب بچے اکوموڈیٹ بھی ہو جائیں گے. جی سر بس میں صرف یہ آپ کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ این ای بی دینے کے بعد این ای بی پاس کرنے کے بعد پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے آپ کو ایک اجازت مل جاتی ہے کہ اب آپ کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں آپ داخلے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور فرض کرو آپ نے وہاں کا این ای بی کا ایکویولنس کا ایگزام دیا 3rd ایئر کا، جس کا مطلب ہے کہ آپ 4th ایئر میں جا سکتے ہیں، آپ نے 3rd ایئر پاس کر لی. اب ان میں سے کئی سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ جس کالج سے یا جس یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہاں پڑھائے گئے ہیں، اور کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ نہیں پڑھائے گئے، وہ اگلی کلاسوں میں پڑھانے تھے. اگر آپ یونیورسٹی یا کالج جاتے ہیں جہاں ایڈمیشن کے لیے اور وہاں کوئی ایک ایسا مضمون ہے جو آپ نے نہیں پڑھا اور وہاں پڑھایا جا چکا ہے 3rd ایئر میں یا 2nd ایئر میں، تو یونیورسٹی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ جی آپ وہاں پچھلی کلاس میں جائیں، پہلے وہ مضمون پاس کریں، پھر ہم آپ کو آگے بھیجتے ہیں. سو اب آپ یہ جو آگے جا کے ایڈمیشن لینا، ایک تو آپ کو سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف اے پوزیشن، سیٹ وہاں خالی ہوگی، پھر ان کی جو شرائط ہیں وہ آپ کو پورا کرنا ہوگی اس یونیورسٹی کی کہ آپ نے کون کون سے ایگزامس پاس سبجیکٹس پاس کر لی ہیں، وہ آپ کو ٹرانسکرپٹ دکھانا ہوگا. یہ سب جو آگے آپ نے پروسیس ہے یہ آپ نے اس لوکل اس یونیورسٹی اور اس کالج سے آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے. پاکستان میڈیکل کمیشن اس سارے پروسیس میں صرف یہ آپ کو سرٹیفائی کر رہا ہے کہ آپ داخل ہوں گے تو ہم آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ رجسٹر کر لیں گے. تھینک یو سر، بہت ہی کنکلوسیو تھا. بس میں اینڈنگ پر 2-3 چیزیں مینشن کرنا چاہتی ہوں. کچھ کمپلینٹس ہمارے پاس آئی تھی، فار انسٹنس محمد فاروق مجاہد کی، جنہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ اویسینا میڈیکل کالج جو ہے وہ جو کمنگ ایئرس کی جو فی ہے اسٹرکچر وہ کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، ان میں ریگولیرٹیز ہیں. تو اور کچھ ہمارے پاس کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے، جو ان کی طرف سے بھی ہے کہ فی ارریگولیرٹیز ہو رہی ہیں. تو جہاں کہیں بھی جن اسٹوڈنٹس کو بھی ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن بھی اور آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس کو بھی جہاں بھی فی ارریگولیرٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایز پر دا ریگولیشنز یو آر سبجیکٹڈ ٹو نوٹیفائی پی ایم سی. نوٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے ابھی بھی لائیو سیشن میں بتایا تھا کہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے FEECOMPLAINT feecomplaint@pmc.gov.pk. یہاں پر آپ اپنے نام اور اپنے ڈیٹیلز کے ساتھ ود پراپر ایویڈنس، جس میں آپ کی فی سلپس آ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشنز آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کمپلین کیجیے. ریسٹ assured we are not going to disclose the identity. We are going to just take up the complaints with the proper evidence and we are going to take up the cases with the respective colleges. PMC بہت proactive طریقے سے فی ریگولیرٹیز کے کیسز کو لے رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ ریزالو ASAP بیسس پہ کرنے کی طرف پوری کوشش کر رہے ہیں. Thank you so much. I would like to thank all my panel members and sir ending from your side. Thank you very much for contacting us, giving us your feedback and also identifying the problems and the complaints that you have. We are always there to solve them. فی کے معاملے میں اور دوسرے کچھ کالجز کے ریگولیٹری معاملات میں آپ لوگوں نے کی اور ہم آپ ایک ٹرانسفر ہوتا ہے کہ آپ نے کمپلینٹ کی اور اس پہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے، قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے. آپ کے پاس آپ کی کمپلینٹ آتی ہے، جیسے آپ کو ابھی ثنا نے بتایا کہ آپ کی آئیڈینٹی ریویل کیے بغیر ہم کالج سے پوچھتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کمپلینٹ آئی ہے، ان کا موقف لیا جاتا ہے. پھر جیسے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی کمپلینٹ کریں تو پلیز supply us with the proof that we can confront the institution with. Then they are asked to submit the evidence that what they are claiming is true. اور اس سب کے بعد پھر جو بھی کوئی اس کے بعد جو ایکشن لینا چاہیے لیا جاتا ہے. اور اس سارے پروسیس کے اندر کالجز انسٹیٹیوشن سب کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ایک ادارہ ہے جو کمپلینٹس کو سن رہا ہے اور ان کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے، تو وہ ان اٹ سیلف ایک ڈیٹرنٹ ہوگا کہ وہ ادارے اس سوچ میں کوئی بھی ادارہ نہ رہے. آئی ایم شیور کہ سب ایسا کرتے بھی نہیں ہیں کہ اس سوچ میں نہ رہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہم سو
ایکشن لیا جائے گا. اس کے لیے آبویسلی ایک ڈیو پروسیس ہوگا جس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, بٹ جب وہ سب کو نظر آئے گا تو انشاءاللہ یہ کمپلینٹس بھی آپ کی کم ہوتی جائیں گی. بٹ ڈو ریمین ان ٹچ اینڈ ڈو کیپ اس انفارمنگ. It's extremely important for us to be informed and also in knowledge of what you people are thinking about Pakistan Medical Commission. Thank you جی, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہماری نیکسٹ جو ای کچہری ہوگی وہ ہم پراپرلی اناؤنس کریں گے اگین آن آر فیس بک پیج. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی فردر گریونسز ہوں گی, جو بھی کمپلینز انکوائریز ہوں گی, ہم ان کو ود ٹائم جو ہے وہ ایڈریس کرتے جائیں گے اینڈ ویل میک شیور کہ ہم اس پورے پاتھ کو, اس پورے طریقہ کار کو اور اسٹریم لائن کر سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.